Direct and indirect narration are today's topic. What is direct and what is indirect narration? Um, Pay attention to the sentences, the first two sentences. He said to me, I have a keen interest in English literature. He said to me, comma, then quotation marks, I have a keen interest in English literature, quotation marks closed. The next sentence, he told me that he had a keen interest in English literature. Now, looking at the meanings of both the sentences, the meanings of both the sentences are the same. They convey the same meaning without any change. Although, if we look at the physical appearance or the apparent form of both the sentences, there are slight differences. For example, in the first sentence, which is the sentence of direct narration. Why do we call it direct narration? Because you see this part of the sentence written inside the quotation marks. This part of the sentence shows the exact words spoken or uttered by the subject of the sentence. He is the subject. He has done an action of what? Of saying something to me. Now this action, this said, whatever he has said is here mentioned in the quotation marks, which means that this is the direct narration. These are the actual words spoken or uttered by the speaker. Now I have quoted this part, these words, the way they were spoken by the subject without any changes. These are the exact words which came out of the mouth of the speaker. Now this is what we call the direct narration, where we use the exact words spoken by the speaker. The second sentence is indirect narration. Although there is no difference in the meanings of the sentence. They both mean the same. The ideas are the same. The only difference is that of the form, the way they are expressed. So the first one is the sentence of direct narration, where we have the first part known as the reporting speech, while the part of the sentence in inverted commas, commonly known as inverted commas, but these are actually the quotation marks. These are quotation marks. The part of the sentence inside the quotation marks is the reported speech. Reported. This has been reported from whom? He, the subject, right? Now, in indirect narration, we do not have these two parts of the reporting or the reported speech. We have a plain sentence where the exact meanings without any changes are expressed. So he told me that he had a keen interest in English literature. Now, if you look at the sentence, the changes that have occurred in the sentence of indirect narration are: number one, said to is converted into told, right? Then comma and quotation marks are removed, and instead of those, that, the conjunction that is used, that is a conjunction. Conjunction means combining words which combine clauses or sentences. Now this comma and quotation marks have been removed, and we use the conjunction that. I has been changed with third person he. Now why do we change these persons? That will be discussed later. But we are just pointing out the initial changes that we have observed. So I have a keen interest in English literature. He have is changed into had. The rest of the sentence, a keen interest in English literature, that is the predicate, that is the same. First of all, we try to understand what what this direct narration is, what is reporting speech, what is reported speech, and then we will discuss the changes that occur while we convert a sentence from direct narration into indirect narration. So the above two sentences convey the same meaning or idea despite their difference in form. The first sentence is in direct narration, where the exact words of the subject are enclosed in quotation marks and is known as the reported speech. Another example, he said to me, I'll share the data with you. The same. This is reporting speech. I'm reporting to my listeners that he said to me.
he has said something. Now this part inside the quotation marks is the reported speech. Now when we convert this sentence of direct narration into indirect, we say he told me that he would share the data with me. And observe the differences. Persons are changed. See, I is changed into you and you is changed into me. Why and how these changes occur, we will discuss it in the upcoming slides. Just bear with me. Now another example, he said to me, okay, we have already, this is the same sentence. So this is the reporting speech. The part of the sentence outside the quotation marks is the reporting speech, while the part of the sentence inside the quotation marks is reported speech. Now, there are certain rules for changing the narration from direct into indirect narration. The first change and the most important is to change. You should know how to change a person's. We have discussed persons in detail, that there are three persons: the first person, second person, and third person. First person includes I and we, singular and plural. Then second person you, singular also you, and plural is also you. While third person, the singular we have he, she, it, or singular name, and in plural we have they or plural names. Now, if we have first person in the reported speech, you see the first, second, and third person pronouns in the reported speech change as below. If there is a first person in the reported speech, it is changed as per the subject of the reporting speech. Now let's go back to this sentence. We said that first person in the reported speech, this is reported speech, the first person in the reported speech changes according to the subject of the reporting speech. Now in the reporting speech, he said to me, he is the subject, action is performed by he, काम करने वाला ही है ना, और उसका एक्शन क्या है, said, कि he has said something. Now this is the subject, this is the object. ठीक है. Now first person changes according to the subject of the reporting speech. Now if you come back to this sentence, I is the first person, so I will share the data with you. I, in the indirect narration we have used he. The reason is that this is first person pronoun and this changes according to the subject of the reporting speech. तो I को हमने सब्स्टिट्यूट किया he के साथ क्योंकि ये सब्जेक्ट है, तो यहाँ पे he. Then persons डिस्कस कर रहे हैं तो अभी सिर्फ पर्सन ही डिस्कस करेंगे. You second person है, second person. It changes according to the object of the reporting speech. Object of the reporting speech. Go back to the sentence. This is second person, you. अब यहाँ पे object होना चाहिए, object मौजूद है me. So this second person pronoun changes according to the object of the reporting speech. That is why if we look at the indirect sentence narration, you is substituted with me. वही me के साथ हमने substitute किया because me is the object और second person है तो object के मुताबिक change किया. ठीक. और अगर थर्ड पर्सन हो, इफ वी हैव थर्ड पर्सन इन द रिपोर्टेड स्पीच, तो इट डज नॉट चेंज. थर्ड पर्सन चेंज नहीं होगा. अगर ही, शी, इट, दे या नेम्स हो तो वो चेंज नहीं होंगे, वो उसी तरह आएंगे. अच्छा, अब इस एग्जाम्पल को देख लो. शी सेड टू मी आई विल गिव यू हिज डिटेल्स. शी सेड टू मी आई विल गिव यू हिज डिटेल्स. शी सब्जेक्ट है, मी ऑब्जेक्ट है. ये तो रिपोर्टिंग स्पीच में आ गए दोनों. रिपोर्टेड स्पीच में आप देख लो, वी हैव फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन, फर्स्ट पर्सन सिंगुलर आई, राइट. देन वी हैव सेकंड पर्सन यू, and we also have a third person in the sentence. So we have all the persons, the first, second, and third persons in these sentences, which we will discuss. Now let's change this sentence into indirect narration, applying the rules of change of persons. Now said to is converted into told. जब told आ जाए उसके बाद to नहीं लगेगा, ये याद रखिएगा.
most of the students they commit this mistake of using to with told. That is not right. So she told me, कॉमा और कोटेशन मार्क्स को हटा के दैट आ गया. आते हैं persons पे. Now first person as we discussed earlier, changes according to the subject of the reporting speech. First person changes according to the subject, second person according to the object of the reporting speech, and third person does not change. Now let's see. I is changed into she, that she would give me. Now because this is the first person, then first person changes according to the subject of the reporting speech. Now subject is she, that is why we have used she here. You, second person changes according to the object of the reporting speech. Now she would give me. Why me? Because the object is me, the object of the reporting speech is me. So second person you जहां पे भी आए reported speech में वो इसके मुताबिक चेंज होगा, तो मैंने चेंज किया me. और his क्योंकि थर्ड पर्सन है, थर्ड पर्सन possessive है, so it will not change, it will remain as it is. I have not changed third person, I have used the same person. So third person will not change, while first and second person will change as we have discussed. Now the second sentence, we also, I have tried to include all the persons in these sentences. ये तीनों persons मैंने इसीलिए include किए हैं ताकि आपको इसकी समझ आ जाए. अच्छा, he said to her, they have conveyed your message to me. उन्होंने आपका पैगाम मुझ तक पहुंचाया है. Now they is third person plural, ठीक है. your message, you second person है और me first person. चेंज करो इसको, थर्ड पर्सन तो चेंज नहीं होगा, दे ही आएगा. said to change into told. Now he told her, that आ गया. दे थर्ड पर्सन तो चेंज नहीं होगा. हैव को हेड में कन्वर्ट कर दिया, वो टेंस बाद में डिस्कस करेंगे कि टेंसेस कैसे चेंज होंगे. योर मैसेज, नाउ यू इज सेकंड पर्सन, तो हमने इसको ऑब्जेक्ट के मुताबिक चेंज करना है. ऑब्जेक्ट क्या है? हर. तो हर को सब्स्टिट्यूट, यू को, योर को सब्स्टिट्यूट करो हर के साथ, ऑब्जेक्ट के साथ, तो हमने कर दिया हर मैसेज. टू हिम, ये हिम कहां से आया? बिकॉज मी है तो मी फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन है, एंड वी सेड दैट फर्स्ट पर्सन चेंजेस अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट ऑफ द रिपोर्टिंग स्पीच, जिस तरह इस सेंटेंस में हमने किया कि शी सेड टू मी आई विल गिव यू. नाउ आई वाज फर्स्ट पर्सन एंड दिस वाज चेंज्ड अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट ऑफ द रिपोर्टिंग स्पीच, दैट इज व्हाई वी यूज्ड शी. इसी तरह यहाँ पे मी फर्स्ट पर्सन ऑब्जेक्टिव केस है, फर्स्ट पर्सन है लेकिन ऑब्जेक्टिव केस है ना, आई मी माई, तो इस फर्स्ट पर्सन है इसलिए सब्जेक्ट के मुताबिक चेंज होगा. अब जब ये सब्जेक्ट यहाँ पे आएगा तो हिम हो जाएगा. क्यों? क्योंकि ये मी ऑब्जेक्टिव केस है, आई मी माई होता है ना, इसी तरह ही, हिम और हिज, तो यहाँ पे ऑब्जेक्टिव हिम आएगा. सब्जेक्ट है और फर्स्ट पर्सन को हमने चेंज किया है सब्जेक्ट के साथ. ओके, सो ये पर्सन्स हैं, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन. चेंजेस which occur in the sentence according to these rules. First person changes according to the subject, second person according to the object, and third person will not change the way it is not changed in this sentence and in the second sentence as well. They is used in the same way, ठीक है, without any changes. You second person object, हर आ गया, और me first person तो subject. अच्छा, बात है टेंस पे. If the reporting speech is present or sometimes future, the tense of the reported speech will not change. Only change of persons takes place. अगर ये कहते हैं कि अगर ये रिपोर्टिंग स्पीच अगर ये प्रेजेंट में हो, सेड टू की जगह सेज हो, या फ्यूचर हो कभी कभार, तो ये जो टेंस है इस सेंटेंस का, ये जो टेंस है
ये चेंज नहीं होगा, ये हैव फिर हैव भी आएगा, ठीक है। द टेंस ऑफ द रिपोर्टेड स्पीच का जो टेंस होगा, चाहे वो कोई भी हो, चाहे वो प्रेजेंट इंडेफिनिट हो, कंटिन्यूस हो, परफेक्ट हो, या कोई और हो, that will not change. Only change that will take place will be change of persons. So persons will change if the reporting speech is present or sometimes future. वहां पे फिर आपने सिर्फ और सिर्फ persons को चेंज करना है, टेंस को चेंज नहीं करना होगा, ठीक है। However, if the reporting speech is past tense, the change in tense of the reported speech would be as follow. कहते हैं कि अगर reported speech past में हो तो फिर इस टेंस में, रिपोर्टेड स्पीच के टेंस में जो चेंजेस आएंगी वो कुछ ऐसे होंगी। अगर रिपोर्टिंग स्पीच पास्ट है और रिपोर्टेड स्पीच प्रेजेंट इंडेफिनिट है, तो रिपोर्टेड स्पीच प्रेजेंट इंडेफिनिट से चेंज होगा पास्ट इंडेफिनिट में। इफ द रिपोर्टिंग स्पीच इज पास्ट, रिपोर्टिंग स्पीच अगर पास्ट इंडेफिनिट है and the reported speech is present indefinite, then the reported speech will change into past indefinite. Similarly, if the reported speech is present progressive or present continuous, it will change into past continuous. Now, all the tenses have been mentioned here, and the changes that will occur are also mentioned. Present perfect, if the reporting speech is past indefinite, these changes will occur only if the reporting speech is past tense. अगर रिपोर्टिंग स्पीच पास्ट टेंस हो और रिपोर्टेड स्पीच ये हो, रिपोर्टेड स्पीच अगर इन टेंसेस में हो तो वो फिर इसमें चेंज होंगी, रिपोर्टेड स्पीच इसमें चेंज होगी। तो रिपोर्टिंग स्पीच को आप पास्ट रखो और फिर आप देखो कि अगर रिपोर्टेड स्पीच प्रेजेंट परफेक्ट हुई तो वो पास्ट परफेक्ट में चेंज होगी। एक एग्जांपल आपको मैंने यहाँ पे मेरे ख्याल में दी भी है, ये वाली, ये रिपोर्टिंग स्पीच पास्ट टेंस है, सैड है, ठीक है। रिपोर्टेड स्पीच का जो टेंस है वो प्रेजेंट परफेक्ट है, हैव कन्वेड। नाउ दिस इज अ सेंटेंस ऑफ प्रेजेंट परफेक्ट, हैव प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब। Present perfect will change into past perfect. Now if you look at this sentence, have is changed into had, meaning thereby that present perfect is changed into past perfect. और यही मैं डिस्कस कर रहा हूं कि प्रेजेंट परफेक्ट पास्ट परफेक्ट में, प्रेजेंट कंटिन्यूअस पास्ट कंटिन्यूअस में, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में, इसी तरह ये चेंजेस आएंगी। अच्छा, अगर रिपोर्टिंग स्पीच पास्ट इंडेफिनिट है और रिपोर्टेड स्पीच भी पास्ट इंडेफिनिट है, तो रिपोर्टेड स्पीच चेंज होगी पास्ट इंडेफिनिट से पास्ट परफेक्ट में, ठीक है ना। रिपोर्टेड स्पीच चेंज होगी पास्ट इंडेफिनिट से पास्ट परफेक्ट में। और अगर रिपोर्टिंग स्पीच पास्ट इंडेफिनिट है एंड द रिपोर्टेड स्पीच इज पास्ट कंटिन्यूअस और पास्ट प्रोग्रेसिव, it will change into past perfect continuous. Or similarly, sentences of past perfect and past perfect continuous or progressive will not change, they will remain the same. In sentences of future, if reporting speech is past indefinite and reported speech is one of these four of future tense, so the only change will be that will or shall will be changed into would and should. फ्यूचर में अगर रिपोर्टिंग स्पीच पास्ट है और बाकी सेंटेंस फ्यूचर में है, इंडेफिनिट प्रोग्रेसिव परफेक्ट या परफेक्ट प्रोग्रेसिव है, तो उसमें जो चेंज आएगा वो सिर्फ ये कि विल और शेल चेंज हो जाएंगे वुड या शुड में। मॉडल ऑक्सिलरीज है ना, ये मॉडल ऑक्सिलरीज हैं, तो ये चेंज होंगे वुड और शुड में। अच्छा, फिर अगर एक सेंटेंस है डायरेक्ट नरेशन में, in indirect speech, tenses do not change if the words used within the quotes, quotation marks के अंदर जो लिखा हुआ है, अगर वो habitual action या universal truth के बारे में बात करती है,
तो वो फिर चेंज, टेंस जो है फिर वहां पे चेंज नहीं होता। अब आप देख लो यहाँ पे कि ही सेड वी कैन नॉट लिव विदाउट एयर, हम हवा के बगैर, एयर के बगैर हम नहीं रह सकते। नाउ दिस इज अ फैक्ट, अ ट्रूथ। ये पास्ट में भी ट्रूथ था, अभी भी ट्रूथ है, और पर आगे भी ट्रूथ रहेगा। So there will be no change in the tense of such sentences, they will remain the same. uh, और यूनिवर्सल ट्रूथ्स, जो यूनिवर्सल ट्रूथ्स होती हैं, फॉर एग्जांपल द सन राइजेस इन द ईस्ट, या ही सेड ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, ठीक है, तो ये यूनिवर्सल ट्रूथ्स हैं, इनका टेंस चेंज नहीं होगा, ठीक है। अच्छा, टाइम और एडवर्ब्स में कुछ चेंजेस आती हैं जब आप चेंज करते हो रिपोर्टेड डायरेक्ट नरेशन से इनडायरेक्ट नरेशन में। ये वो कहती है, ये वो कुछ एक्सप्रेशंस हैं जो कि चेंज होती हैं। मिसाल के तौर पे अगर रिपोर्टेड स्पीच में आपका टुडे है, तो वो टुडे चेंज होगा दैट डे और द सेम डे में। अगर टुमारो हुआ तो द नेक्स्ट डे, द फॉलोइंग डे। इसी तरह अगर यस्टरडे हुआ तो द डे बिफोर और द प्रीवियस डे। नेक्स्ट वीक, मंथ, नेक्स्ट वीक, नेक्स्ट मंथ या नेक्स्ट ईयर, वो चेंज होगा द फॉलोइंग वीक, द फॉलोइंग मंथ और द फॉलोइंग ईयर में। इसी तरह लास्ट वीक, लास्ट मंथ और लास्ट ईयर चेंज होगा द प्रीवियस वीक, द प्रीवियस मंथ, द प्रीवियस ईयर। नाउ चेंज होगा जस्ट देन में, अगो, बिफोर, हेयर को देयर में, दिस को दैट में। इन चीजों को आपने, यू हैव टू कीप दिस इन माइंड, cause because if you forget these things, if you miss or if you forget to change these words, your sentences will be wrong. If, अगर आप देख लोगे, अगर एक एक दिस को आपने अगर चेंज नहीं किया दैट में, अगर इस एक दिस को आपने दैट में चेंज नहीं किया या हेयर को देयर में चेंज नहीं किया, तो आपका कंप्लीट सेंटेंस वो गलत होगा। इसीलिए इन एक्सप्रेशंस को आपने याद करना है कि जी ये किस तरीके से चेंज होंगी और किस चीज में चेंज होंगी। हेयर देयर में, दिस दैट में, गो बिफोर में, इसी तरह ये सारे। तो इसमें अगर आप मिसिंग करते हो, आप इन चीजों को अटेंशन नहीं पे करते, तो इस एक लफ्ज की वजह से आपका पूरा का पूरा सेंटेंस गलत हो सकता है। ये स्लाइड्स, ये आज का लेक्चर, इसकी ये फाइल भी मैं शेयर करूंगा आपके पोर्टल पे, आप वहां से डाउनलोड कर ले। ये फाइल आप अपने पास डाउनलोड करें और इसको इसको पढ़ो आप, ताकि आप इसको, आपको इसकी समझ आए। अच्छा, इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस,